Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Students, today we will cover the topic of system of equation. Well, what is system of equation? What is the nature of the solution set? What is graphical analysis and slope-intercept relationship? We will study it one by one. So first of all, what is system of equation? A system of equation is a set consisting more than one equation. Its dimension is always presented by m multiplied by n. Well, by m we means number of equations, by n we means number of variables. If the dimension is just like 4 into 2, then it means that we have 4 equations with us and there are 2 variables. If you are asked to find out about the nature of the solution set by comparing the slope and y-intercept, then you can easily find out about the nature of the solution set, that whether it is a unique solution set, it is an infinite many solution set, or no solution set. What are these sets? Students, we have studied about this formula, y is equal to mx plus c. Well, m is the slope and c is y-intercept, the point where the line cuts the y-axis, and m is the slope. We have discussed, we have explained it thoroughly, that what is slope, how can we interpret the slope. Students, if the resulting equation forms like this, if the slope of the first line is not equal to the slope of the second line, well, do not bother about intercept, whether c1 is equal to or not equal to. We are not concerned about intercept. But if the slope of the first line is not equal to the slope of the second line, then we have a unique solution set. And if the slope of the first line is equal to the slope of the second line, but C1 is not equal to C2, then this system of equation, the nature of this solution set is called no solution set. And if both of the terms are equal with each other, means if the slope of the first line is equal to the slope of the second line and also C1 is equal to C2, then we have infinite many solution set. Students, let's solve an example to clarify about the nature of the solution set by comparing the slope and y-intercept. Let's say there is an equation, there are equations, 2 equations, 3x minus 9y is equal to 24, minus x plus 3y is equal to 0. Students, we have 2 simultaneous equations with us. I'll just write on the first equation over here, 3x minus 9y is equal to 24, and the second one here, minus x plus 3y is equal to 0. What are we going to do? We are going to rewrite these 2 equations in slope-intercept form. Why are we going to rewrite these equations in slope-intercept form? Because we are comparing the slope and the y-intercept. Minus 9y, 3x, here it has positive signs. Well, if we just transform it to the other side, then we will get minus 3x plus 24. Then y is equal to minus 3 upon minus 9x plus 24 upon minus 9. Y is equal to minus minus cancel. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 1 over 3 and 3 3s are 9, 3 8s are 24, minus 8 upon 3. So from the first equation, we get m1 is equal to, this is our m1. m1 is equal to 1 upon 3 and c1 is minus 8 upon 3. This is our second equation. We will just 3y is equal to x. Now it will become plus x, x plus 0. Y is equal to 1 over 3x plus 0. Here we got m2 is equal to 1 upon 3. This is our m2. And c2 is equal to 0. This is c2. m1 is m1 equal to m2? Yes, m1 is equal to m2.
Is C1 equal to C2? No, C1 is not equal to C2. In this situation, the nature of the solution set will be called no solution set. But students, in graphical method, we will be facing three sort of solution sets. What are those? The first one is if two lines, let's say this is line number 1, this is the line for equation number 1, and this is the line for equation 2. If they cut each other, then this sort of solution set is called unique solution set. And if we are confronted with such sort of solution that if the first line is parallel to the second line, means if two lines are parallel with each other, if they do not intersect each other, if they do not cut each other, then this is called no solution set. And if we get such sort of solution that the first line and the second line overlap with each other, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ गई तो उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सेट. तो ग्राफिकली हमारे पास तीन तरह के सूरत-ए-हाल आ सकती है. एक ये यूनिक सॉल्यूशन सेट अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर जाती है, एक नो सॉल्यूशन सेट अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं, और अगर एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर जाती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सेट है. तो आप सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को ग्राफ पे पुट करेंगे. ग्राफ पे अगर ऐसी सूरत-ए-हाल आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन, ऐसी आ गई नो सॉल्यूशन, ऐसी अगर आ गई तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. Students, if you are asked to find out the nature of the solution set by elimination method, then you can easily find out and tell about the nature of the solution set. Let's say we have got an example, 2x plus 4y is equal to minus 8, and let's say we have another equation that is minus 3x plus 2y is equal to 4. Students, we have two simultaneous equation number 1, equation number 2. What we are going to do, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन सेट क्या है, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन सेट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सेट और नो सॉल्यूशन सेट. तो कोई भी एक वेरिएबल हम लोग एलिमिनेट करेंगे. कैसे? ये 2x है, ये 3x है, कोई एक वेरिएबल बराबर करेंगे, ये 4y है, ये 2y है. तो अगर ये 4y बन जाएगा तो फिर ये हम लोग इसको कट कर सकते हैं. तो हम लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विथ 2, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखेंगे, 2x plus 4y is equal to minus 8. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को minus 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, minus 6x, 2 2s are 4y, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8. क्यों मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं. तो हम लोग ये तभी पॉसिबल है, तभी कटेगा जब हम लोग इसके निशान साइन चेंज करेंगे. अगर एक प्लस को और एक माइनस को तभी वो कट जाएगा. तो ये हम लोगों ने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस करेंगे और प्लस को माइनस करेंगे. ये कट किया, 2x plus 6x ये 8x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8 और माइनस 8 ये माइनस 16 हो जाएंगे. x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8, x इज इक्वल टू 8 1 8 2 16. तो हमें x की वैल्यू मिल गई -2. अभी x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in any equation 1 में कर लेते हैं. तो 2 into x की वैल्यू -2 plus 4y is equal to -8. 2 2s are ये -4 plus 4y is equal to -8. ये 4y is equal to, ये उस तरफ जाके यहाँ पे माइनस का निशान है, वहां जाके प्लस हो जाएगा.
तो +4 -8 से निकालें -4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू 4 × 4, ये y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अगर आपको डाउट है कि आपका सवाल सही है या गलत, तो आप x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें, आपकी दोनों साइड्स बराबर है। स्टूडेंट्स, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग एस जैसे ग्राफ को नो सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहलाती। अब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ गए, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो उसको हम लोग नो सॉल्यूशन सेट कहते हैं। और अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर जाती हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन सेट कहलाता है। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाती है, दोनों का स्लोप और इंटरसेप्ट सेम हुआ, तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। और अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो हम लोग उसको नो सॉल्यूशन सेट कहते हैं। सो वी हैव गॉट 3 solution sets for the graphical methods. If two lines cuts each other, then that is called a unique solution set. If they are parallel with each other, then that will be called no solution set. And if the first line overlaps, if the second line overlaps the first line, then it is called infinite many solution set. Students, if you are asked to find out the nature of the solution set by graphical method, then you can easily find out the nature of the solution set graphically. Well, let's we have a question. For example, x minus 2y is equal to 4. Then let's take another equation. Minus 4x plus 8y is equal to minus 10. Students, we have two simultaneous equations. Equation number 1 and this is equation number 2. We have to solve it graphically. Students, we know कि अगर हम लोगों ने ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। We want to get 2 points for each of the equation. Minus 4x plus 8y is equal to minus 10. Here for x intercept, put y is equal to 0. If we make y equal to 0, then we get the point of x, that is x is equal to 4. And for y intercept, put x is equal to 0. If you make x is equal to 0, minus 2y is equal to 4. Y is equal to 4 divided by minus 2. Y is equal to minus 2. Here x is 4, y is 0. Here x is 0, y is minus 2. And we will do the same for this equation. For x intercept, put y equal to 0. Minus 4x is equal to minus 10. X is equal to minus 10 divided by minus 4. Minus minus cancel. X is equal to 2 2s are 4, 2 5s are 10. 5 upon 2 by 5 upon 2 means to say 2 upon 5. Here we got the point 2.5 when we put y equal to 0. For y intercept, put x equal to 0. y निकालने के लिए हमें x को 0 पुट करना है, x निकालने के लिए हमने y को 0 पुट किया, y निकालने के लिए x को 0 पुट करो। अब x को 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 प्लस 8y is equal to minus 10. Then this will become 0. 8y is equal to minus 10. Y is equal to minus 10 divided by 8. 2 4s are 8. 2 5s are 10. Y is equal to minus 5 upon 4. Minus 5 upon 4 is equal to minus 1.5. Here we got the point when x is equal to 0, then y is minus 1.5. We will make the graph for this. X positive, x negative, y positive, y negative. For the first equation, we have x is equal to 4. This is 0, 1, 2, 3, 4. So this is the point.
and there y is minus 2. This is minus 1, this is minus 2. So we got this point. For the second equation, we have x is equal to 2.5. This is 1, 2 and 2.5. Second, y is minus 1.5.